अगर सर्कल से एक्सटर्नली टच कर रहा है तो कितना कॉमन टेंजेंट्स आएगा? 3 कॉमन टेंजेंट्स. ओके, आपको स्क्रीन में दिख रहा है 3 कॉमन टेंजेंट्स. So when two circles touch each other internally, then how many common tangents will be there? Only one common tangent. Okay, one common tangent. So intersecting circles का So 2 common tangents. Diagrams clear है ना? ऐसा कुछ इसमें एक्सप्लेन करने का नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. It's pretty obvious. Okay. Next, if one circle is inside another circle, how many common tangents will be there? एक भी नहीं होगा सर. हाँ, so no common tangents. Clear? If the circles are outside सर एक one बार another, लिख ले, कॉपी करने दीजिए सर. हाँ नहीं, पहला एक देख लीजिए. If the circles are not touching each other, they are one outside the other, then how many common tangents will be there? 4. 4 common tangents. Okay, so these are the cases that you have. So if you want to write in copy also, just draw the diagrams. Okay, agar one circle outside the other circle, then number of DCTs, number of TCTs, make 2 columns. Okay, so there are 2 DCTs and 2 TCTs. Okay, if they are touching each other externally, just draw these diagrams, that will be sufficient. You have 2 DCTs and 1 TCT. Intersecting, 2 DCTs, no TCTs. Internal touching, 1 DCT, 0 TCTs. One circle inside other circle, no DCTs, no TCTs. This is the thing which you need to remember. A table याद रखना पड़ेगा. Clear है ना everything? Easy है? सर एक बार पीछे जाइए सर. These cases we have already discussed. C1, C2 is less than R1 minus R2. These cases we have already discussed in the last class. Okay, you can just note the summary, you don't need to write everything. अगर summary अगर note किया तो that will be sufficient. Clear? Shall we go forward? Motivator, shall we go forward from here? ये प्रॉब्लम देखिए. You have to find the number of common tangents to these circles. How many common tangents are there to these circles? Okay, so how do you find the number of common tangents of the 2 circles? You just have to decide which case the 2 circles are in. Okay, so circle 1, what is the center? 0, 0, and the radius is 2. Circle 2, the center is 3, 4, the radius is how much? Root of 3 square plus 4 square plus 24. देखिए, yes or no? It becomes minus 24, minus of minus 24 is plus 24. So 7. Calculations clear है दोनों? Are the calculations clear? So what is the distance between the centers? Root of 3 square plus 4 square कितना होगा? 5. Distance between the centers is 5. Okay, is it clear? So which case is this? Are these numbers falling in? Can you see that 5 is equal to 7 minus 2? The distance between the centers is equal to modulus of R1 minus R2, the difference between the radii. So which case are these 2 circles in?
दे आर, कौन सा केस में है? कैन एनीबडी टेल मी विच केस दीज टू सर्कल्स आर इन? Sir, one circle inside the other circle touching each other. हाँ, touching internally. Okay, that is called they are touching internally. So how many common tangents are there? What is the answer? A, B, C, One. D. So B is the right answer. ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं? नेक्स्ट स्लाइड में जाओ. Yes, sir. समझ में आया? बोलिए अगर नोट किया तो विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes, sir. Noted. Okay? Yes, sir. Good. Now let us go to questions. Okay? So first question देखिए. The equation of the line passing through this point and touching the circle. Can you draw this rough diagram? देखिए, x square plus y square is equal to 25. Standard circle, right? Center 0, 0. Radius is equal to 5. You have a point minus 2, 11 somewhere here. The equation of a line passing through this point and touching the circle. How many tangents will be there from this point? Two tangents. Two tangents हो सकता है, right? एक ऐसा tangent आ सकता है, एक ऐसा आ सकता है ना, right? So you have to find these two tangents. That's the question. So how do you do that? देखिए अलग अलग प्रोसेस है. So what is the general tangent to this circle? Anybody? इस सर्कल का जनरल टेंजेंट का फॉर्मूला क्या है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस आर माइनस, कोई बोल सकते हैं? व्हाट इज द टर्म दैट आई हैव टू राइट हियर? 5 रूट ऑफ एनीबॉडी? 1 प्लस उस इक्वेशन का स्क्वायर. किसी इक्वेशन का स्क्वायर? सर m स्क्वायर. हाँ, m स्क्वायर सिंपली. ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज the general equation of a tangent, right? This is any tangent of slope m. Now what should this tangent do? What should my slope be? What should my tangent do according to the question? According to the question, a tangent क्या करना पड़ेगा? बोल सकते हैं? This is a general. So pass through minus 2 comma minus 11. It has to pass through minus 2 comma 11. So minus 2 comma 11 should satisfy this equation, right? So satisfy कराइए. 11 is equal to minus 2m plus or minus 5 root 1 plus m square, right? Yes or no? So if you rearrange this 11 plus 2m and squaring on both sides भी किया तो whole square is equal to 25 into 1 plus m square होगा या नहीं? Will you get this equation? Yes, sir. So if you simplify, this is a quadratic in m, right? So what do you get on solving this? You're going to get two values of m, right? What are those two values? Those two are the slopes of the two tangents, yes or no? So solve करेंगे. So 121 plus 4m square plus
44m is equal to 25 plus 25m square. So 21m square minus 44m minus 96 is equal to 0. Okay, you have to solve this equation. Any middle term splitting? Any valid middle term splitting? देखिए 21 is 7 into 3, 96 is 3 into 2 power 5. Okay, these are the numbers that you have. 44 बनाना है इससे. हमारा कैलकुलेशन सही है क्या? एक चेक कर लीजिए आगे जाने से पहले. कैलकुलेशन सही है? यस सर यही आया है। यस सर यही आ रहा है। सो देखिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कुछ रास्ता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने का. सेवन थ्री से 21 इंटू बेसिकली 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. देखिए कुछ इधर उधर करके (21 into 2) 42 84 72 and 28 72 and 28 आ रहा है क्या? 7 4s are 28 and 72. Good. So this implies 21m square minus 72m plus 28m minus 96 is equal to 0, which implies 3m times 7m minus कितना आएगा 21, right? सर 24 7m minus 24 plus 4 into 7m minus 24 is equal to 0. So m is equal to either 24 by 7 or minus 4 by 3. Yes or no? So the slopes of the tangent should be either 24 by 7 or minus 4 by 3. Okay. So what is the equation of the first tangent? अगर स्लोप 24 by 7 होना है तो the equation should look like 24x minus 7y, right? Yes or no? And how do you get the right side numbers? Using the point. So यहाँ कितना आएगा minus 48 minus 77 minus 48 minus 77 minus 125. Okay, here you're getting minus 8 plus 33, that is 25. Okay, these are the two equations that you have. Do you have any answer here? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. क्लियर? सो ऐसा क्वेश्चंस कर सकते हैं एग्जाम में. देखिए चेक कर लीजिए, आर देयर एनी न्यू कॉन्सेप्ट्स और आर द कॉन्सेप्ट्स नोन टू यू. दिस इज ए वेरी फ्रीक्वेंट क्वेश्चन इन जेई. ऐसा क्वेश्चंस आते हैं.
इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट यूज किया? वी हैव यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ द जनरल इक्वेशन ऑफ tangent to a circle. Okay, clear? Yes, sir. Shall I go to next part? Next question. देखिए, he has used a different method. देखिए सॉल्यूशन में we have a different method. देखिए एक और मेथड आपको समझा रहा हूँ. So in this we have used the general equation of circle, right? दूसरा मेथड है, we can start with the point. So any line passing through the point -2, 11 is given by y minus 11 is equal to m into x plus 2. ऐसा no? ऐसा भी स्टार्ट कर सकता हूँ. Yes, sir. Yes, sir. And what is the condition that I need to apply on this line? कोई बोल सकते हैं? So this is any line passing through this point -2, 11. So what is the condition that needs to be applied on this line to find the Sir, perpendicular distance equals to radius. yeah, good. So perpendicular distance is equal to radius वाला condition use करके perpendicular distance से mod आता है ना. So क्योंकि प्लस और माइनस आएगा ना, दो आंसर्स आएगा आपको. ओके, यू गोइंग टू गेट द सेम आंसर्स. सो लेट अस सी हाउ द सॉल्यूशन इज डन. फर्स्ट, a general line is written, perpendicular distance is equal to 5. इक्वेट किया, you get the exact equation. देखिए सेम इक्वेशन आएगा. This is the same equation, right? Yes, sir. So those are the equations of tangents. Okay, ये क्वेश्चन देखिए. A line meets the coordinate axis at A and B. Okay, as you go on reading the question, parallelly try to construct a diagram. Okay, coordinate axis, a line meets the coordinate axis at point A and point B. A circle circumscribes the triangle OAB. Okay, you have a circumcircle like this. Clear? If m and n are the distances of the tangent to the circle at origin from the points A and B, at point O you have drawn a tangent. Tangent at the origin, you have the tangent at the origin. Okay, you have the tangent at the origin. So from the tangent at the origin, the perpendicular distance of A and B are m and n. Clear है? If m and n are the distances of the tangent to the circle at origin, देखिए, you have to phrase this, you have to divide this into parts to understand this. M and n are the distances of what? Of the tangent to the circle at origin from the points A and B. Clear है क्या नहीं? Easy? Yes, sir. Then the diameter of this circle in terms of m and n. That's the question. Clear or not? सर हाँ बोलिए बेटा. सर क्या लिखा है लाइन कहा a line meets the coordinate axis. A line meets the coordinate axis at A and B. Okay? नोट कर रहे हैं क्या क्वेश्चन?
Yes, sir. Yes sir, नोट कर रहे सर. Okay. So question का concept clear है? Do you understand the meaning of the question? Shall I go forward? Yes, sir. देखिए, अब डायग्राम समझ में आया? देखिए, is the diagram clear? Yes, sir. So what is the question? You have to express the diameter in terms of m and n. That's the question. Okay. So first, so let a be a comma 0, b be 0 comma b. Is it okay? We are assuming the coordinates of a and b. What is the equation of circle? याद है diameter form of a circle? Do you remember the diameter form? X minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into Y minus Y2. equal to 0. So can we get this diametric form? This is the equation of circle. Okay, clear है? देखिए, Yes, sir. x1 is 0, x2 is x1 is a, x2 is 0, y1 is 0, y2 is b. Okay, नोट किया? सर रुकिए सर कर रहे हैं. You can write this by yourself. आप अपने से लिख सकते हैं ये. Yes, sir. Yes, sir. Noted. सिंप्लीफाई कर सकते हैं? On simplifying, this is the equation of the circle that you are going to get. Yes or no? Yes, sir. Now, what is the tangent at origin? For this circle, what is the tangent at origin? Origin is 0 comma 0. Is origin a point on the circle? Yes or no? Is origin a point on the circle? इस सर्कल के ऊपर origin है क्या नहीं? Yes, sir. So, Yes, sir. do you know how to find tangent at any point on a circle? इस सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है, तो how do you find the tangent on at that point? T equals to 0. T equal to 0. So x square becomes what? 0x. X1. X1 is 0x, right? Y square becomes 0y 0y. 0y. minus a times x becomes what? X X plus plus 0 by 0. 2. Yes or no? Y becomes y plus 0 by 2 equal to 0. So effectively what do you get? देखिए, इसको सिंप्लीफाई किया तो I think you can simplify it to this point. You're getting ax plus by equal to 0.
ट्राई कर लीजिए अपने से सिंप्लीफाई करके. आर यू गेटिंग दिस? Are you getting this? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So next what should you do? कुछ बोल सकते हैं नेक्स्ट क्या करना है? What will be the next step? Sir, perpendicular distance find out So करें. you have now got the circle, you have the tangent, you have the points a comma 0 and 0 comma b. So now obviously you're going to find the perpendicular distances, right? So m is the perpendicular distance. So can you find this? ये अपने से कर सकता है क्या? एक्सप्लेन करना है. So ax plus by equal to 0. What is the distance from a comma 0? क्या करना पड़ेगा? You have to substitute this point on this line. So you're getting a square by root of a square plus b square, right? So from 0 comma b, you have to substitute the point. You're going to get b square by root of a square plus b square. Okay? Clear? Yes, sir. Okay or not? Yes, sir. So what is m plus n here? m and n add किया तो क्या आ रहा है बोलिए? 2R. m plus n add किया था, you're getting a root of a square plus b square, right? Which is nothing but ab. Yes. Yes or no? And ab is nothing but the diameter of the circle, right? So answer clear है? Yes, sir. समझ में आया बेटा? Yes, Yes, sir. sir. Shall I go to next question? सर m प्लस n डायमीटर है. हाँ वही आया था ना, m plus n is root of a square plus b square. m plus n is root of a square plus b square, right? यस सर. But ab का लेंथ कितना है देखिए, because a is a comma 0, b is 0 comma b, ab will also be turn out to be a square root of a square plus b square, right? Distance formula से. ओके सर. Okay. The question में it's not given that AB is the diameter. Why am I saying that AB is the diameter? Sir, because AOB equals to 90 degree angle in Why a am I saying that semicircle. AB is diameter? Because this angle is 90 degrees. This angle is 90 degrees, so this has to be the semicircle, right? That's why this has to be the diameter, okay? Shall I go to next question? ये क्वेश्चन देखिए. Equation of this circle with center 4 comma 3 and touching this circle x square plus y square equal to 1. You have a small circle at the origin, x square plus y square equal to 1, and you have another circle whose center is at 4 comma 3 and it has to touch this circle.
So effectively what should you find here? सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है तो ठीक है, सर्कल का सेंटर तो आपको ऑलरेडी दिया गया है, और क्या चाहिए आपको? जस्ट हैव टू फाइंड द रेडियस, राइट? यस और नो? So do you know how to find the radius? In the question Sir, it's given that the distance circles between are center. touching each other. So condition क्या है touching each other का? Distance between the centers should be equal to R1 plus R2. R1 plus R2. So distance between the centers कितना है? 0 0 से 4, 3 तक डिस्टेंस कितना होगा? पाइथागोरस थ्योरम से 5 हो जाएगा. 5. R1 is how much? 1 plus R2. So R2 should be simply 4. 4. So हो गया. So x minus 4 whole square plus y minus 3 whole square is equal to 16 is the answer. So if you expand this, what are you going to get? Which option are you going to get? Can you tell me fast which option is the right answer? D. A. A beta. A is the right answer. Okay. C1 C2 is equal to R1 plus R2. So R1 is equal to 4. So this is the answer. If you simplify it, you're getting A answer. Okay. Shall I go to next question? Yes, sir. Okay. सर वो पूछ जाइए सर एक बार. हाँ ओके. क्वेश्चन में दिया नहीं क्या सर्कल्स इंटरनल टच कर रहे हैं या एक्सटर्नल टच कर रहे हैं? ओके क्वेश्चन में देखिए, इट्स ओनली गिवन दैट द सर्कल्स आर टचिंग ईच अदर. ध्यान दे दीजिए, इट्स ओनली गिवन दैट द सर्कल्स आर टचिंग ईच अदर. सो ऐसा भी हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है ना, राइट? यस सर. So in the first case we have found the first circle. Okay, so how do you find the second circle? Second circle के लिए condition क्या है? C1 C2 is equal to R1 minus R2, right? So R1 is equal to 5 plus 1, 6 भी हो सकता है, ध्यान दे दीजिए. R can be 6 units also. Is it clear? So if the circles touch each other internally, then C1 C2 should be equal to R1 minus R2. Okay. So R1 6 भी हो सकता है. Clear or not? So this can also be an alternate answer. Okay. Is this okay? Yes, sir. Can I go forward? Yes, sir. Look at this question. The equation of a circle which touches the y-axis at 0, 2 and cuts off an intercept 3 on x-axis
the equation of a circle which touches y-axis at 0 comma 2. Okay, it has to touch y-axis at 0 comma 2, and x-intercept should be 3 units. If you have a circle like this has to be 3 units. This has to be 3 units and it has to touch the y-axis here. Okay. सर अगर पीछे जाइए तो सर सर अगर पीछे जाइए तो क्या है, पीछे जाना है क्या? यस सर Okay. सर दूसरा वाला इंटरनली वाला केस था ना? हाँ, इंटरनल वाला केस है. So, are you getting any ideas how to do this question? So, if you want to find the general equation of a circle, you need 3 conditions, right? So, x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. This is a general circle, right? So, to find the particular answer from a general equation, how many conditions do you need? How many unknowns are there in this equation? 3. So, how many conditions do you need? You need 3 conditions, okay? So, in this question, what is the first condition? What is the first condition? Can you give me an account of the informations that are given in this question? The equation of a circle which touches the y-axis, okay? समझ में आ रहे? The circle touches y-axis is a condition, okay? And what is the second condition? At 0 comma 2, where it exactly touches is also given, okay? And what is the third information? Can anybody tell me what is the third information is? सर एक्स इंटरसेप्ट. हाँ, x intercept is 0 comma 2. Okay, sorry, x intercept is 3 units. Okay, x intercept is 3 units. So, what is the equation corresponding to the first information? Can you tell me the equation corresponding to this? Touching y-axis means y-intercept is 0, f square is equal to c. Yes or no? याद है ये? Y-intercept का formula 2 root f square minus c. If this is equal to 0, then f square is equal to c. Okay. Then the circle has to pass through 0 comma 2, right? If it is touching the y-axis at 0 comma 2, that means 0 comma 2 is a point on this circle. So if you substitute 0 comma 2 on the circle, you're going to get 4 plus 4f plus c equal to 0, right? Okay or not? And x-intercept is 3. So 2 root g square minus c is equal to 3. So g square minus c is equal to 9 by 4. These are the equations that you have. Okay, clear hai equations? Yes, sir. So how you are going to solve this is based on theory of equations, how we solve equations. देखिए यहाँ
c के प्लेस में f स्क्वायर पुट कर सकता हूँ यहाँ. कैन आई पुट f स्क्वायर हियर? ऐसा नो? सर हाँ बोलिए बेटा. सर 4+4a+c कैसा है सर? बिकॉज 0,2 इज ए पॉइंट ऑन द सर्कल. सब्स्टिट्यूट कर लीजिए सर्कल पे. ओके सर. Are you getting the same equation? देखिए ध्यान से देखिए. So f square equal to c. So in the second equation, in the place of c, I can put f square. Yes or no? So you're getting f square plus 4f plus 4 equal to 0. So f plus 2 whole square equal to 0. So f is equal to how much? Okay or not? -2. So if f is -2, you put it back in the first equation. So what is c? 4. So c is equal to 4. Okay, you got f and c. Now you need to get g. So g square is equal to 9 by 4 plus c plus 4. Okay, that is equal to 25 by 4. So g square is 25 by 4. So g is equal to how much? Plus or minus 5 by 2. Okay or not? There are two possible answers for c. Sorry, there are two possible answers for g. Okay. क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. So once you got g, f, c, you have to just substitute them in the equation. So what is the required equation? X square plus y square. G is plus or minus 5 by 2. So 2g is how much? Plus or minus 5x. Okay. And 2f is minus 4. So minus 4y plus 4 equal to 0. Clear है ये? So can anybody tell why you are getting two equations for this question? Why are you getting two answers for this question? सर लेफ्ट में भी एक सर्कल हो हाँ. सकता है. So सर्किल इस तरफ भी हो सकता है ना, ऐसा ना? क्लियर है? ओके. चले गो फॉरवर्ड. Yes, sir. सर एक बार रिपीट कीजिए क्या बोला? कौन सा पार्ट रिपीट करूं? सर 2 आंसर क्यों होगा भाई? कहा बेटा कौन सा? सर आंसर 2 क्यों होगा? देखिए क्वेश्चन में क्या दिया, 0,2 पे टच करना है, राइट? एंड एक्स इंटरसेप्ट 3 होना चाहिए. सो दोनों का एक्स इंटरसेप्ट 3 टचिंग एट 0,2 सेटिस्फाई करना है ना. सो इस तरफ एक सर्कल आ सकते हैं, इस तरफ भी एक सर्कल आ सकता है ना, राइट? यस सर. सो दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग टू आंसर्स. वन आंसर प्लस लिया तो एक सर्कल आएगा, माइनस लिया तो दूसरा सर्कल आएगा. ओके.
समझ में आया बेटा ये क्वेश्चन? समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. देखिए आप ज्योमेट्रिकली भी करने के लिए कोशिश कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव ए सर्कल लाइक दिस, फॉर एग्जाम्पल ये 0,2 है ना, ये सेंटर है, राइट? सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो 3 जो है 3/2 हो जाएगा, ऐसा ना? ऐसा ना? व्हाट इज दिस लेंथ? कैन यू टेल मी व्हाट दिस लेंथ इज? Perpendicular distance. हाँ, ये 2 ही होगा ना, क्योंकि इसके Yes, कोऑर्डिनेट्स sir. 2 है ना, सो दिस विल बी 2, राइट? So if this is 2, this is 3/2, what is the radius? What is this radius? Can we get it from Pythagoras theorem? Root of 4 plus 9/4, right? फाइव बाई टू हो जाएगा. 5/2. ओके, रेडियस आ गया, क्लियर? सो इसके बाद सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज ऑल्सो रेडियस, राइट? This is also equal to radius. So should the x value be 5/2? Yes or no? Yes, sir. And y value 2 ही होना चाहिए because this is 2. The perpendicular distance, the distance from y-axis is 2. Yes or no? So if the circle is on this side, what will be the change? The change will only be, instead of plus 5/2 you are going to have minus 5/2, right? So x plus or minus 5/2 whole square plus y minus 2 whole square is equal to 5/2 whole square. If you solve this, then also you're going to get the same answer. वही आंसर आएगा आपको. किसी को समझ में आ रहे? Yes, sir. मतलब ऐसा करके you can have more than one methods to solve the question, okay? X minus 1 whole square plus y minus 3 whole square is equal to r square. X square plus y square minus 8x plus 2y plus 8 is equal to 0. These two intersected two distinct points. इसका मतलब ये वाला केस में है. Then r का वैल्यूज चाहिए आपको. I think we have done a question like this in the last class, right? So सॉल्व करेंगे. इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स. वन सेंटर इज 1,3, द अदर सेंटर इज 4,-1, राइट? सो डिस्टेंस कितना होगा, कोई बोल सकते हैं? कैन समवन गेट मी द डिस्टेंस? 5. Distance is from distance formula 5 units, okay? Now what is the first radius? R1 is nothing but r as given in the question. What is R2? Root of 16 plus 1 minus 8. So it will turn out to be 3, okay? 3. So what is the condition for intersecting? The distance 5 should lie between what? R1 plus R2 and R1 minus R2, right? Come mod. Is this the condition for intersection? Yes, sir. So यहाँ से इस तरफ से क्या आएगा? R is greater than 2R है, okay?
From this side you're getting r is greater than 2, and from this side modulus of r minus 3 is less than 5. Okay, सर सेकंड वाला आंसर होगा सर बी. good. So let us see. So r minus 3 less than 5 किया तो r is less than 8, right? और क्या हो सकते हैं? 3 minus 8 less than 5 भी हो सकते हैं, राइट? क्योंकि मॉड है ना, प्लस आर माइनस हो सकते हैं, राइट? ऐसा नो. सो r is less than minus 2 आएगा, which is not valid. ऐसा नो. आर कैन नॉट बी नेगेटिव. r cannot be negative है ना. So one answer is r greater than 2, the other answer is r less than 8. So what is the answer? R belongs to 2 to 8. Okay, clear? The answer is B. Next question. देखिए ऐसा क्वेश्चन कभी देखा है? फाइंड द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 10,7 फ्रॉम द कर्व दिस. सर हाँ बोलिए बेटा. सर क्वेश्चन के पीछे कुछ लिखा है, इसके लिए क्वेश्चन ठीक से दिखाई नहीं दे रहा पहले वाला लाइन. ठीक है, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ. फाइंड द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस. Find the greatest distance of the point 10,7. So देखिए बेटा, फर्स्ट हम देखेंगे whether this point lies inside the circle or outside the circle. How do you find that? Inside और outside कैसे find करते हैं? S greater than 0, less than 0 or equal to 0. Okay. So let us put the point. So what are you getting? 100 plus 49 minus 40 minus 14 minus 20. Obviously greater than 0 ही आ रहे हैं. Okay. Is it clear? So now you have a circle and you have a point outside the circle. So as you can see, different points on this circle are at different distances from this point, right? अलग अलग points अलग अलग distances में रहेगा, ऐसा ना? So आप guess कर सकते हैं कौन सा point सबसे दूर रहेगा इस circle का? CP plus R. हाँ, the diametrically opposite point, right? The diametrically opposite point is the farthest point of the circle from this point, yes or no? So greatest distance कैसे find कर सकते हैं? Center से distance find करके प्लस आर करने से हो जाएगा. Clear है? So greatest distance is equal to CP minus R. Sorry, CP plus R. Smallest distance क्या होगा अगर क्वेश्चन दिया तो? CP minus R. Clear है? Where what is CP?
CP is the distance between the given point and the center. इसका center कितना है 2,1 and radius I think is 5. radius देखिए कैलकुलेट करके देखिए 5 आएगा. So can you give me the answer to this question? 15 units. हाँ 15 सही है. So the largest distance is CP plus R. Okay. So 15 is the answer. सबको आ गया बेटा आंसर? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. Yes, sir. हाँ ये भी इजी क्वेश्चन है. Sir. हाँ बोलिए बेटा. पीछे जाना है क्या? Yes, sir. देखिए इतना ही है, आप अपने से भी कर सकते हैं क्वेश्चन. दिस इज अ क्वेश्चन दैट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ. इजी क्वेश्चन है बहुत. ओके बेटा. चलो गो फॉरवर्ड. ये क्वेश्चन देखिए. फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट टू द सर्कल. याद है लेंथ ऑफ टेंजेंट के लिए एक फॉर्मूला देखे हम. लेंथ ऑफ टेंजेंट इज नथिंग बट रूट S1. याद है? Yes, sir. Yes, sir. बट डायरेक्टली इसमें सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं. या you have to divide this equation by 2 and then substitute 1, 2. So try to get the answer. Try to get the answer. Anybody got the answer? √6. ये आंसर है, चेक कर लीजिए. Yes, sir. Okay. Next question. Hmm.
आपका आवाज़ नहीं आ रहा है बेटा सही से. ओके. Yes, sir. क्वेश्चन देखिए बेटा. प्रूव दैट द tangent to the circle x square plus y square is equal to 5 at point 1 comma minus 2 also touches the circle. कुछ आइडिया आ रहा है बेटा कैसे करना है? फर्स्ट सर्किल का 1 का माइनस 2 पे टेंजेंट प्रूव करना है कि इसको भी टच करेगा. सो फर्स्ट हम क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप, लेट अस फाइंड द टेंजेंट एट 1 माइनस 2 टू द सर्कल. वो तो बहुत इजी है ना. सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? एनीबॉडी? What is the equation of tangent to the circle at this point? x(x1 plus y(y1) equals to a square. So final answer बोल दीजिए x minus 2y equal to 5. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So now you have to check whether this line touches this circle also. How do you check it? So what is the center of the circle? 4 minus 3. Okay. What is the radius of the circle? Root of g square plus f square minus c root 5. Okay. So how do you check whether this line is touching the circle or not? The perpendicular distance from the center should be equal to the radius, right? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So देखिए perpendicular distance match होगा या नहीं? Perpendicular distance P is equal to 4 plus 6 minus 5 by root 5. So is it turning out to be root 5, which is equal to radius? Yes, sir. बोलिए बेटा. आवाज सही नहीं आया बेटा. और क्यों है क्या? कोई और बोलिए बेटा, क्या बोल रहे हैं? Could anybody else hear him? No, sir. ओके बेटा, समझ में आया ना ये क्वेश्चन?
देखिए बेटा, the explanation is given if you don't understand. So tangent at 1 minus 2 is this. It will touch this circle if the perpendicular distance is equal to the radius. So perpendicular distance check किया, it is equal to root 5, which is the radius of the second circle. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कॉमन tangents. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कॉमन tangents टू दीज टू सर्कल्स. ये देखिए बेटा, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. फर्स्ट सर्कल का सेंटर क्या है? 1 3. सेकंड सर्कल एंड रेडियस कितना है फर्स्ट सर्कल का? रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. रेडियस 1 आ रहा है. देखिए सेकंड का सर्कल का सेंटर कितना है? -3, -3, 1 and radius is 9 plus 1 minus 1, 3 units. Okay, the second circle is the bigger circle. Radius is 3 units. And ये दोनों सर्कल्स कौन सा केस में है वो पहले देखेंगे, because the number of common tangents depends on the case that these two circles are in. So R1 is equal to 1, R2 is equal to 3. What is the distance between the centers? D. Root of 4 square plus 2 square, right? देखिए ऐसा ना. So root 20 आ रहा है. देखिए सही कि नहीं? Yes, sir. So कौन सा केस में आ रहा है? देखिए रूट 20 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2 है ना. देखिए R1 प्लस R2 4 आ रहे हैं. सो रूट 24 से बड़ा है क्या नहीं? यस सर. सो कौन सा केस में है? नॉट cutting each other, one outside the other. Okay, so how many common tangents will be there? 4 common tangents. 4. So 2 direct common tangents, 2 transverse common tangents. Okay, so how do you find the equations of these tangents? Tangents की equations कैसे find करेंगे? So उसके लिए हम हमारा theorems use करेंगे. The theorem is that the point of intersection of the direct common tangents, what does it do? It divides the line joining the center in the ratio what? R1 is to R2 externally, right? Yes or no? So क्या करना पड़ेगा? C1 C2 को आप 1:3 एक्सटर्नल रेशियो डिवाइड करने वाला पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा. ओके, so point which divides C1 1,3 and C2 -3,1 in the ratio, कौन सा रेशियो में? 1:3 एक्सटर्नली का फॉर्मूला यूज करेंगे. ओके, सो याद है एक्सटर्नल डिवीजन वाला फॉर्मूला. So 1 into -3, which is -3, minus of 3 into 1, which is 3, by 1 minus 3. Okay, mx2 minus nx1 by m minus n, and
1 into 1 1 minus 3 into 3 minus 9 by 1 minus 3. So minus 6 by minus 2 minus 8 by minus 2. So it is 3 comma 4. Okay, समझ में आया ये? फर्स्ट पॉइंट समझ में आया बेटा? बोलिए यस और नो यहाँ तक। सर रिपीट कीजिए ना। थोड़ा सा बोल सकते हैं बेटा कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया? ये एक्सटर्नल डिवीजन वाला पार्ट समझ में आया? ये सर थ्योरम वो हम समझ देखे है में ना? नहीं आया। हाँ, हमारा थ्योरम ये है कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द direct common tangents divides the line joining the centers in the ratio r1 is to r2 externally. So simply आप 1,3 और -3,1 इस पॉइंट्स को 1:3 एक्सटर्नल रेशियो में डिवाइड करना है। सो डायग्राम तो इंटरनल वाला बनाएंगे बट फॉर्मूला एक्सटर्नल वाला यूज करेंगे। एक्सटर्नल में जस्ट माइनस एक्स्ट्रा आएगा ना, ऐसा ना? अपने से एक बार करके देख लीजिए, आई यू गेटिंग द सेम आंसर और नॉट? स्पेसिफिकली कहीं दिक्कत है तो बोल सकते हैं। ओके बेटा, या दिक्कत हो रही समझ में? देखिए बेटा, रेस्पॉन्ड करिए, यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. यस सर। अब टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? अब क्या करेंगे? वी नो दैट दिस पॉइंट इज 3,4. सो 3,4 से you can take either first circle or second circle. So from 3,4 if you draw tangent to the first circle, it will automatically be a tangent to the second circle, right? Or from 3,4 if you draw a tangent to the second circle, it will automatically be the tangent to the first circle also, yes or no? समझ में आ रहा है? So now you can forget about one circle. A circle के बारे में भूल ही जाइए। अब क्या करिएगा? Just find the tangent from 3,4 to the first circle. समझ में आ रहा है? लॉजिक समझ में आ रहा है बेटा? समझ में सर आया? और एक बार बोलिए। देखिए अभी what we have said is, what we have found out is, if you draw the common tangents then they'll meet at 3,4, right? So now if you want the common tangent, you don't need to consider both the circles, you just neglect one circle. Take the simpler circle and find the tangents from 3,4 to this circle. These tangents will automatically be the common tangents, right? समझ में आ रहा है? यस सर। सो आप अभी एक सर्किल मान लीजिए, इसमें दोनों बड़ा सर्किल्स है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपको,
बट बहुत बार क्या होता है, एक छोटा सर्किल होता है, एक बड़ा सर्किल होता है। सो उस केस में आप क्या है, बड़ा इक्वेशन को आप नेग्लेक्ट करिएगा, जस्ट छोटा इक्वेशन का सर्किल का टेंजेंस निकाल सकते हैं। बट हियर नाउ व्हाट यू शुड डू, फ्रॉम 3, 4 you have to find the equations of tangents. So how are you going to find the equations of tangents? So let us write a general line passing through 3, 4. Y minus 4 is equal to m into x minus 3. Yes or no? This is a general line passing through 3, 4. Now slope कैसे find करिएगा? M should be such that the perpendicular distance of this line from 1, 3 should be equal to the radius 1. Clear or not? समझ में आया या नहीं? This is the equation of a general line passing through 3, 4. Now what should this line satisfy? It has to satisfy that the distance from 1, 3 should be equal to the radius 1. Okay. So modulus of 1, 3 से distance 1, 3 put कर लीजिए, m minus 3 plus 4 minus 3m divided by root of 1 plus m square should be equal to 1. इसको स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करके सॉल्व किया तो 2m's आएगा या नहीं? ऐसा ना? यहाँ कुछ दिक्कत हुआ या समझ में आया? देखिए बेटे, यहाँ समझ में आया या कुछ दिक्कत हुआ? कुछ रेस्पॉन्ड करिए बेटा। Yes, sir. So we are going to solve this equation and get the two values of m. एंड वो m's को आप वापस इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो टेंजेंस की इक्वेशन आ जाएगा। देखिए ये दिस इज ए ऐसे क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, वंस यू गेट दी इक्वेशंस ऑफ DCTs, इसके बाद क्या करना पड़ेगा, सेम प्रोसेस फॉर TCTs ऑल्सो। इंस्टेड ऑफ एक्सटर्नल रेशियो वी यूज इंटरनल रेशियो and get the point of intersection. Once you get the point of intersection, again same general line passing through that point, distance perpendicular distance को आप radius के equate करना है, you're going to get m and you're going to get the answers. समझ में आया बेटा प्रोसेस? अब मैं स्टेप्स दिखाऊं? अच्छा यस सर, सर। देखिए स्टेप्स देखिए। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट क्लियर है। देखिए बेसिकली C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2। बेसिकली कौन सा केस है वो डिसाइड किया हमने फर्स्ट पार्ट में। इज दिस पार्ट ओके? Yes, Yes, sir. नेक्स्ट क्या करेंगे, देयर विल बी 4 टेंजेंट्स। लेट अस फाइंड द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स। सो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स के लिए क्या करना है, आप फर्स्ट सेंटर्स को आप R1:R2 एक्सटर्नल रेशियो फाइंड करना है, राइट? सो यू गॉट द पॉइंट 3,4। 3,4 से एक जनरल लाइन निकाले आप। यहां तक क्लियर है? देखिए स्टेप बाय स्टेप आप समझने के लिए कोशिश करिए। फर्स्ट वी हैव डिसाइडेड द केस, नेक्स्ट वी हैव टेकन द इंटरसेक्शन पॉइंट, and then a general line passing through the intersection point. Now what are you going to do with this line? You're going to apply the equation of perpendicular distance is equal to the radius. Okay, यही इक्वेशन लिखा है, ये समझ में आ रहा है? This is the equation which we have written.
इसके बाद स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, सब कुछ करने के बाद आपको 2 वैल्यूज आया m का, m इज इक्वल टू 0 और 4/3। ओके, इसके बाद आप m इज इक्वल टू 0 और 4/3 इस इक्वेशन में पुट करिएगा। समझ में आ रहे? देखिए बेटा, यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. So this is the first part. This completes half the question. Okay? Next half क्या होगा? नेक्स्ट ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। इसके लिए फर्स्ट पार्ट क्या होगा? इंटरनल डिवीजन। सो इंटरनल डिवीजन वाला पॉइंट क्या है? 0,5/2। सो जनरल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, चेक कर लीजिए, इफ यू नो द प्रोसेस यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ आफ्टरवर्ड्स। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. So again you do the same thing. Perpendicular distance is equal to the radius, m find कर लीजिए। Equation of the tangent is this. देखिए बेटा, कभी कभी ऐसा दिक्कत होता है, इस इक्वेशन सॉल्व करने से दिक्कत समझ में आया आपको? m स्क्वायर कट गया, देखिए एक ही इक्वेशन आया, दूसरा टेंजेंट कहाँ गया? दिखाऊं यहाँ प्रॉब्लम क्या हुआ? देखिए समझ में आ रहे? प्रॉब्लम एक बार देख लीजिए। सर्कल सर्कल, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, 2 ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स आना चाहिए ना, राइट? सो फर्स्ट हम क्या किया, ये वाला पॉइंट फाइंड किया। ये वाला पॉइंट कितना आया? 0,5/2। ओके, है ना? सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? y minus 5/2 इज इक्वल टू m into x minus 0। ओके, सो इसको सॉल्व किया तो mx minus y plus 5/2 इक्वल टू 0। सो व्हाट शुड यू डू विद दिस लाइन? फर्स्ट सर्किल ले लीजिए, फर्स्ट सर्किल सेंटर से डिस्टेंस 1 इक्वेट कर लीजिए। सो यू गॉट दिस इक्वेशन, but in this equation m square has got cancelled out and you got only m is equal to minus 3/4। एक ही स्लोप आया, सो उस स्लोप से आप टेंजेंट की इक्वेशन निकाल दिया। सो बट सो दूसरा स्लोप क्या हुआ? व्हाट इज द सेकंड इक्वेशन? व्हाट इज द सेकंड इक्वेशन टेंजेंट? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सेकंड टेंजेंट? सो यूजुअली क्या होता है, देखिए ये याद रखना है आपको, बहुत बार ऐसा होता है। देखिए अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है ना, दिस इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, राइट? yes or no? This equation works only if m is not equal to infinity। परपेंडिकुलर लाइंस के इक्वेशंस इससे नहीं आएगा, ध्यान दे दीजिए। अगर आपका टेंजेंट गलती से परपेंडिकुलर हो गया, यहां से सॉल्यूशन नहीं आएगा। क्वाड्रेटिक से आप 2 सॉल्यूशंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं बट एक ही सॉल्यूशन आया, इसका मतलब क्या है? द अदर सॉल्यूशन इज व्हाट? इन्फिनिटी। इसका मतलब है दूसरा जो टेंजेंट होगा वो वर्टिकल टेंजेंट होगा। समझ में आ रहे?
सो वर्टिकल टेंजेंट की इक्वेशन कैसे होता है? वर्टिकल टेंजेंट का मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस, एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट जैसा होगा ना, राइट? सो दिस इज पासिंग थ्रू 0,5/2 एंड वर्टिकल, सो कौन सा होगा? x इक्वल टू 0 होगा ना, राइट? सो दैट्स द नेक्स्ट टेंजेंट. सो एक टेंजेंट 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 होगा, दूसरा टेंजेंट डायरेक्टली y एक्सिस हो जाएगा. क्लियर है? देखिए यही दिया है, सिंस द सर्कल्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग वी शुड गेट टू वैल्यूज ऑफ m, but we got only one value of m, which is minus 3/4. For both the equations of circles we observe that f square is equal to c. Both the circles are touching y axis, therefore the fourth tangent is x is equal to 0. Clear है? The slope of y axis is infinity, that's why we are not getting the solution. Clear? समझ में आ रहा है क्या नहीं? Yes, sir. So this is a problem which comes to you sometimes. Circles का straight lines की equation y equal to mx plus c में if you apply conditions, if you are expecting two answers but only get one answer, that means that the other answer is m is equal to infinity. Clear है? Yes, sir. So we'll stop here for today.